सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे और संपन्न। फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि धुंधुकारिका को जो है प्रेत योनि से प्राप्ति और जो है उसका उद्धार, यानी धुंधुकारिका जो है कैसे प्रेत योनि को प्राप्त हुई और फिर उसके बाद से उसका उद्धार कैसे हुआ, इसका हिंदी में पूरा कथा वर्णन तो मैं कर दिया हूँ, लेकिन ये जो हम अभी जो करने वाले हैं उच्चारण, एक तरह से पाठ ही मान लीजिए, पाठ ही शुद्ध शब्द बोला जाता है वेद पुराणों के लिए। तो पाठ जो मैं करने वाला हूँ वो संस्कृत श्लोकों का करने वाला हूँ, क्योंकि बिना पौराणिक तत्व में, बिना सार्थ और जो है उसका जो सार्थक जो रहस्य होता है वो श्लोकों के माध्यम से होता है। और जो अपने पुरानी सभ्यता रही है वो संस्कृत का ही रही है। अब तो हिंदी अंग्रेजी कई भाषाएं बोले जाने लगे हैं, लेकिन पहले जो अपने वैदिक धर्म जो था वो संस्कृत का माध्यम ही था और संस्कृत में ही बोला जाता था, हिंदी में नहीं बोला जाता था। समय के साथ साथ जब परिभाषित होता गया और आगे जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे भाषाओं का चलन हुआ और अलग अलग भाषाएं जो है विस्तृत हुई, वैसे ही अपना आज के डेट में मुख्य भाषा हिंदी है। तो हम संस्कृत में पाठ करेंगे। सूत उवाच ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। सभी से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी अपने सनातनी धर्म आपके जानने वाले कुटुंबी जन हैं सबके साथ यह वीडियो शेयर अवश्य किया करें। सूत उवाच पितरयो परते तेन जननी ताडिता घृतं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासा जन्यान्या पुत्रदुःखतः कूपे पातकुतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धव धुन्धुकारे गृहे तिष्ठोत् पश्चात्पन्यावधूभृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्त्वपोषणविभूषि एकदा कुलष्टास्तु भूतडान्याविलिप्तवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युस्मरन् यतस्त्वं तश्च सङ्गेद्वित्तं देश पुनर्गतः ताभ्यो यक्षत्रुवस्त्राणि भूषणानि क्रियन्ति च बहुविच्चयं दृष्ट्वा रात्रो नार्थो व्यपचारयन् चौर्यं करोत्यतो नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति भीतं हरिद्वा पुनश्चैनं मारयिष्यामि निश्चितम् अथोऽर्थगुप्तमूढमस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैव गृहीत्वार्थं यास्याम्यो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चितं कृत्वा स्वप्तं सम्बद्धरश्मिभिः पातं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युपमचक्रमो त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तस्तदाभवत् तप्ताङ्गरसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं ममोर्चुर्गते प्राय साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीतं तथैव च लोके पुष्टं वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यामि वर्षेऽस्मिन् वीतलोकाभिकर्षितः स्त्रीणां नैवस्तु विश्वास्यं दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखे परिभूयते
सुधामयं वचो यात्यां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधारां व्यप्रिय को न योषिताम् संगत्यं वित्तं तायाता कुल्टा भद्रिका दुन्दुकारे बभूवाद महान् प्रीता कुकर्मतः वात्यारोपधरो नित्यं ध्यावान्ततद्विषोऽन्तरम् शीतातपरिचिष्टो निराहार पिपासितः न लेभेतरं क्वापि हा देवेति बहुर्वदन् कियत्कालेनागोकर्णं कर्णो तं लोकात् प्रतिगृह्यतः अनाथं तं विदित्यैव गया श्राद्धमतिकरत् यस्मिन् तीर्थं तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं ब्रह्म स गोकर्ण स्वपुरं समुत्थेयवान् रात्रो गृहाङ्गणे स्वप्नमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय दुन्दुकारीश्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महावज्रतरं वपो सकृन्मेत सकृतधति सकृतः महिषो भवत् सुकृदिन्द्र सकुच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोपकर्णधैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः सोऽपि कोऽपि निश्चिन्तेनाथ तं ब्रवीत् गोपकर्ण उवाच कस्त्वतु रक्तरो रात्रो कृतो यातो दतामिमाम् किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति सन्तनः सूत उवाच एवं पुष्टा तथा तेन गुरुदश्चै पुनः पुनः सशक्तो वचनोच्चारे संयमात्रं चकारः ततो ज्वलो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदयगयत् तत्तेकहत पापौसौ प्रयुक्तमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नातितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तितः लोकानाहिन्दकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्गतां वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धु भक्तमामासु मोचय गोकर्णवचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दुष्टो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धन्मुक्तिश्चेदुपायो न परहित्व किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद विस्तरं प्रेत उवाच गया श्राद्धस्तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं कश्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्यं गोकर्णे विस्मयगतः सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसन्धानां किञ्चिदाकर्ष्यन् विचार्य च धुन्धुकारे निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोपकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तद्वगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रत्या समागता तत्सर्वकतं तेन यज्जातं च यथानिति विद्वातो योगनिष्ठा च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिनेव ते पश्यन् शास्त्रसञ्चयान् तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुखो स्थापितो परं गोपकर्णस्तवनं चक्रे सूर्यवैश्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षेन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूतरः सूर्यस्फोटमित्याभ्यभासतः श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचं सर्वधर्मरूपं तु विस्तृतम्।
सर्वे ब्रुवन् प्रश्नेन कर्तव्यं सुकरं कृतं कोपकर्णे निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देवस्गामार्जना ययुः पंवन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापाक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारक यदेवासनमास्थाय गोकर्णकथयत्कथां सा प्रेतोऽपि तदा यात स्थानं पश्यन्तिस्ततः सप्तगन्तियुक्तं तत्र पश्यत्किचक्रमुत्थितं तन्मूलं छिद्रमविश्वं श्रवणार्थं स्थितो यो वातरूपी तं कर्तुमशक्तो बन्तमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्यत प्रथमस्कन्धस्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षितां गाथा तथा चित्रं बभूव वतैकगन्तिभेदो भूतसप्तं पश्यतां सदां द्वितीयो हि तथा सायं द्वितीयः गन्तिभेदनं तृतीये हि तथा सायं तृतीयगन्तिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तगन्तिविभेदनं कृत्वा द्वादशस्कन्धश्रवणयात्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातो तुलसीदाममण्डितः पीतवाता घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्विता ननामा भक्तारं सद्यो गोपकर्णमिति चाब्रवीत् त्वाहं मोचितं बन्धो कृपया प्रेतमत्तलात् धन्यां भगवतीर्भक्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रद कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थितः अस्माकं प्रलयं सद्यं कथां त्रेयं करिष्यति आद्रसुक्तं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेहत्पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते सर्वे सुरभिर्देवतं सति अकथात्रामिणं पूषां निश्चलं जन्म कीर्तितां किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयता अध्रुवेण शरीरेण न सुखशास्त्रं कथां विना अस्ति तप्तं स्नायुब्धं मातसो तृणतले स्थितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दि मातुरं दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं संसोतं सर्वं कृमिङ्गभस्मसंज्ञानं शरीरेमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कृतोऽयं साध्येन हि यत् प्रातः संस्कृतं चान्तं सायं यश्च विनश्यति तदीयरसमं पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणं लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेवं हि साधनं बुद्धबुद्धा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणयैव कथाश्रवणवर्जिता जडस्य सुखवन्तस्य यत्र गन्तिभेदनं चित्र किमु तदा चित्तगन्तिभेद कथाश्रवात् भेद्यते हृदयं गन्ति छिन्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्तश्रवणे कृते संसारकलदमालेपलक्षान् पठीयसि कथातीर्थं ते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं ब्रुवति तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं तस्पुरे दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्दुले सुता विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णवाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेतं युगकृत श्रवणं समभागेन सर्वेषां दृश्यते फलभेदकृतो जात प्रभुवन्तु हरिप्रिया हरिदास ऊचुः
श्रवणस्य निवेदनं फलभेदोऽत्र संचितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण्यथा मननकृत्तमं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपयस्यं प्रेतेन श्रवणं कृतं मनादि तथा येन स्थिरचितं कृतं घृतम् अदृढं च कृतं ज्ञानं प्रसादेन हतं कृतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचितो हतो जप अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धस्म पात्रकं हतमस्त्रोत्रियं दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वमिन्दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलां मति एवमाधिकृतं चेत् स्यात् तदा वैक्रमणे फलं पुनः श्रावन्ते सर्वासां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठ हरे कीर्तना श्रवणे माति गोकर्णा कथामुच्ये तथा पुनः सप्तरात्रिवतु भूय श्रवणं ते कृतं पुनः कथाया समाप्तौ तो यज्ञातं त्वेतं तच्च नारद विमानय्या स भक्त्यैश्च हरिराविर्बभूवत जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रातन बहवस्तदा पञ्चाजन्यान् ध्वनिचक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तु समालिङ्ग लिङ्ग्या कवस्वासन्दृतं हरि स्वनृत्यान्य घनश्यामान् पीतकौसे यवातमः किरीटिन कुण्डलेन स्था चक्रे हरिक्षणात् तदगामे स्थिता जीवा आदाश्चण्डालजातयः विमाने स्थापिते तेऽपि गोकर्णकृपयस्तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन गोपाल गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगत तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य तीर्थानं न गतिः सदा तं लोकं हे गतास्ते तु श्रीमद्भागवत कथाश्रवात् ब्रह्मोऽत्र किं ते फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं करणेन गोकर्णकथाक्षरो यै पीतस्य ते गर्भगता न भूया बातां पुपर्णासनदेहसूतडै तपोभिरुग्रैश्चरकालसञ्चितै योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यसाण्डिल्योऽपि मुनीश्वर पठ्यते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिलुप्तता आख्येन मेतत् परमं पवित्रं श्रुतं तत्कृतविदिहभोगम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावै नित्यं सुपाठं पुनर्भवम् एव च इति श्रीपद्मपुराणे रेवाखण्डे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पंचमो अध्यायः। ये 5वें अध्याय का श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे आरंभ होगा आपके 6वें अध्याय। कुमार उचुः अत्यते संप्रवक्ष्यामः सप्ताश्रवणे विधिं सहायैर्वसुर्वेश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृता देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यात्रिसंगीतं तार्दं परिकल्प्यते नवास्या आश्विनो जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नवा
एते माता कथ्यारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचका मातानां प्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायासे स्तरे तत्र कर्तव्या चोद्यमाश्चयी देते देते तथा संयं भर्ता प्रेत्य प्रयत्नतः भविष्यति कथां चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा क्वचित् दूरे च युक्तकीर्तना स्त्रियाशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देते देते विरक्ता यै वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेनैव पत्रं प्रेष्यश्च तल्लेखनामिति हृत्तमं सत्तं समाजो भविता सप्तगात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपै च कथां चात्र भविष्यति श्रीभगवत्पीयूषपानाय रसलप्तं पटा भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेततत्परा नावकात कदाचित् दीनमात्रं तपाद् सर्वथा गमनं कार्यं षडोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकरणं तेषां कर्तव्यविनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्प्यते तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा शरणं मतम् विशालवसुधा यत्र कर्तव्य तत्कथां स्थलं शोधनं मार्जनं भूर्मलेपनं धातुमण्डनं गृहोपकस्यमुदधृत्यं गृहकोणे निवेश्यति अवाक्य पञ्चाहतो यत्नादास्ता तीर्णानि समेलयेत् कर्तव्यो मण्डपप्रोच्यै कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वग्निवितानेन विराजितः चक्षुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः अर्ध्वसप्तै लोकाश्च कल्पनीय सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थानीय प्रबोध्य च पूर्वं तेषां मातानानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तो चापि तदा दिव्या मातनं परिकल्प्यते उदङ्गमुखो भवेत्युक्त्वा श्रोतं वे मुखस्तदा काङ्मुखे च द्वद्विक्तां श्रोतं चोन्मुखस्तदा आत्वा पूर्वदिग्जयन पूज्यं पूज्यक्यमध्यत स्वतृष्णामागमे प्रोक्तां देशकाले दिवो विदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धकृते दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृह अनेकधर्मविभ्रान्त स्त्रीणां पाखण्डवादिनः शोकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिता भक्तो पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थाप्य तथाविधं पण्डिता सन्तयाच्छेदं लोकबोधनतत्परः वस्त्राचर्यप्रकर्तव्यं दिनादर्वाप्यते अरुणोदये स्वनिर्वक्त्यं शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यसंक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं प्रयत्नतः कथाविघ्नं विघाताय गणनाथं सम्पूज्येत् पितॄणां सन्तर्प्यं शुद्ध्यर्थं प्रायश्चितं समाचरेत् मण्डलं च कर्तव्य तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुक्तेद्वमन्त्रेण चरेत् पूज्य विधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूज्यान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहकृताङ्गं मामुद्धरं भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तदा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या भिन्ना प्रत्या धूपदीपासमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिप्रसन्नचित्तेन कर्तव्यां केवलं तदा श्रीमद्भगवताख्यायोऽयं प्रयच्छ कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नं नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव
एवं दिनवच प्रोचं वक्तारं चात पूजयेत् संभृत्य वस्त्रभूषाभिः पूज्यांते तं च संस्तवेत् सुखरूपं प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथां प्रकातेन मतज्ञानं विनाशय तदग्रे नियत पश्चात् कर्तव्यं क्रियते मुदा सप्तरात्रं यथा शक्या धारणीयं स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथां भृङ्गनिवृत्त्यै कर्तव्यो तैरेजाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणां वैष्णवाञ्चान्यस्तथा कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयं माता नमाविशेषतः लोकभीता धनागारा पुत्रान् चिन्ता व्युत्तरस्य च कदाचित् सुधामत्ति स लभतेन फलमुत्तमम् आसुर्योदयमारभ्य धार्तत्रियप्रहतरान्तकं वाचनीयां कथां संव्यधीरकण्ठं सुधीमता कथाभिरामं कर्तव्यो मध्याह्ने घटितां द्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा मलमूत्राजयार्थामि लब्ध्वाहारकुतावः भविष्येन कर्तव्यो यो वारं कथार्थिनाम् उपोष्यं सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा धृतपानं पयास्पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्ये कमुक्तेन वा पुनः सुखं साध्यं भवेत्युद्धं कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं वन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवातो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नः करो यदि सप्ताहव्रतानां पूषां निमाशृणु नारद विष्णुदीक्षान्तविहीनानां नादिकारां कथात्रवे ब्रह्मचर्यमधश्रुति पत्रावल्यं च भोजनं कथा सप्ताह मुक्तिं च कुर्या नित्यं कथां प्रति वीतलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदृष्टं पैरुष्टं जहा नित्यं कथा ब्रवीत् कामक्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भमोहं तथा द्वेषं दुरचेयत् कथा ब्रवीत् वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोपव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जेद्यं कथा ब्रवीत् रजस्वालान्यजम्बेलक्षपतिस्तवात्रैकतैस्तथा द्विजबिङ्गवेदवायोश्च न वदिद्यं कथा प्रति सत्यं शौचं दया मौनमार्जनं विनयं तथा उदारमानसं तद्विदेवं कुर्यात् कथा ब्रवीत् दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भया पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकाम शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वध्याया च मृतार्बका स्रवगर्भा च या नारी यथा श्राव्य प्रयत्नता एते तु भिन्ना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधीनामुद्यापनमवाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यफलं काञ्क्षिभि अङ्किजाजनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह क्रमेणैव पुतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुतः कस्य च वक्तुश्च पूजां कार्यो भीति भक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्च दीयतां मृदङ्गाताललितं कर्तव्य कीर्तनं तथा जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वितमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोतां गीतावाच्या परेहनि
व्यश्चेतदा होम कर्तव्य कर्मशान्तये प्रतिश्लोको तु जुह्यायाद्विद्धनं दशमस्य च पायसं मधुसर्पी तिलान्तदिक्संयुक्तम् आत्वाहनं कुर्यात् गायत्र्यं सुसमाहित तन्मयत्वां पुराणस्य परमस्य च यत्तत्त्वयः होमासख्यो बुधो होम्यो दद्या तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूताधिकतानयो दोषयो परसमार्था च पठे नाम सहस्रकं तेन त्यागं फलं सर्वनात्यास्मादिकं यतः द्वादशं ब्राह्मणान् पश्चाद्योजयेत् मधुपायये दद्यासुवर्णं धेनु च व्रतपूर्णं त्वहेतवे सक्तोपलत्रमिमं स्वर्णं सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारै सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधी दत्त्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनै एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणै फलदं श्यामपुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं सर्वकामार्थमोक्षाणां साधनं सानसन्तय कुमार ऊचु इति ते कथं सर्वं किं ते भूय श्रुतुमिच्छति श्रीमद्भागवते नैव भक्तिमुक्तो करैः स्थितं सूत उवाच इति उक्त्वा ते महात्मानं प्रोचुर्भगवती कथा।